Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid and you are on the channel of Medicare. So welcome back. As you know that we have started the section of practicals of our Form D, and this is from the second prof, and now we are going to start the first experiment of pharmacognosy practical, and this experiment is about the study of microscope and its parts. So the other students which are belonging to other study field, they can also join it because the material of study is just the same, and they can get the concept of microscope and how to use it. All the things are explained here in a well manner. So before we are going to start this lecture, I request to you, if you don't subscribe to this channel, then go and press the bell icon and subscribe button so that you can get the further more details and the further more videos on these practicals. So start our lecture. So the first thing is that we are going to define the microscope, that actually what it is and why we are studying it. So definition of microscope is given here. It is an optical instrument used for viewing very small objects that cannot be seen with your naked eye, like the objects like bacteria, various kind of viruses, fungi, algae, all the things they cannot be seen with our naked eye. We cannot see them, okay, but they are present. So in order to see them, we use this microscope instrument, which is a optical instrument. So the microscope magnifies it to the several hundred times, and then we can see these smallest objects. So what are the parts of microscope? So actually there are the three major parts of the microscope: mechanical part, magnified parts, and illuminated parts. Magnified or mechanical parts mean the parts which are holding the mechanic of that microscope, which are holding or supporting the different parts of the microscope. So here, as you can see, I have drawn a microscope for all of you guys, and clearly you can see from the labeling every part of the microscope is labeled, and you also have to draw this diagram on your practical copy. So this is the arm of the of microscope from which you are going to handle this microscope. So you have to grab the microscope from the arm. Then this is the eye lens, ocular lens, from which you put your eye onto that lens, and then you will see it. This is the body tube and eyepiece. This is the lens holder, okay, and these are the three lenses of different 100x, 10x, and 40x with the magnification. These are called objective lens. Here this is called the stage, and this is upper is the stage clips that are used to hold the slide which you put in it, and on the slide you have the smallest object on it. And this is the condenser. This is the mirror which reflects the light. These are the some fine adjusting knobs which are used to magnify or correct the images and correctly set the position of the slide. And this lower part is called as a base of the microscope, which is supporting hold the microscope in its place. And here is the switch on and off is given here. You will on the switch, and then the light will reflect from it. The light will put on your slide, and then after setting the lenses, you can clearly see the smallest object that cannot be seen with your naked eye. So now return back to the theoretical part. So as we are discussing the mechanical parts of the microscope, so I'm moving toward the next page. So here are the first part of the microscope, which is your arm. So the arm is connecting the body tube with the base. So the body tube, the upper part, is connecting with the lower part with this arm, and it is used to support your body tube. So and also it is the agent by which you can hold your microscope. Second mechanical part is the stage. It is a flat platform where you put your slide, and then you will clearly see it. On that stage you are given some clips, stage clips. So these clips are present on the stage, and it is used to hold the slide on its place.
So these clips are very important because they don't allow the slide to move. Okay, so they fix the slide at one place. Then there is the base, which is the bottom of your microscope, and surely it is going to spot your microscope. It just having the purpose of spotting. And then the body tube is also present. It is a part that connects between the eyepiece and the ocular lens. Okay, so body tube act as a support system of your microscope. So as you can see that all the mechanical parts of microscope, they all are doing the function of supporting your microscope. So here I have drawn the previous diagram of the microscope is the diagram of a simple microscope. Now here this is a compound microscope, just having a little bit difference. They contain ocular lens, they contain lens holder, objective lens are here. This is the slide, this is the stage. On this stage clips are present, fine adjustment knobs are present, condenser is given here. This is the arm of that word. This is the body tube. This is the coarse adjustment knobs is also available. This is the switch, and this is your base. Okay, so these things are present in the compound microscope. So the next parts of the microscope are the magnifying parts. As their name indicates, these are the parts which are going to magnify the small objects. So clearly these magnifying objects contains the lenses in it, which are going to show the object, the smallest object. So now let's start the magnifying parts of the microscope. First part is the ocular lens. Ocular lens, the function of ocular lens is to magnify, and it is used to magnification purpose, where to look to see the specimen of which is your desired purpose, and usually it has 10 powers to 15 powers. Okay, but now our microscope has the power of 10. So ठीक है, सो इसकी पावर वगैरह बताई हुई है, और बताया हुआ है कि ये ऑक्यूलर लेंस है जो कि आपको मैग्नीफाई करने के लिए मदद देता है ताकि आप स्पेसिमेन को देख सकें. नेक्स्ट मैग्नीफाइंग पार्ट इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट नोब्स. सो दीज आर द नोब्स हेल्पिंग द मूवमेंट ऑफ स्टेज. एक्चुअली हमें स्पेसिमेन को देखने के लिए स्टेज को मूव करवाना होता है अप डाउन और बैक एंड फॉरवर्ड. सो ये दो तरह के नॉब्स होते हैं आपके पास, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और फाइन एडजस्टमेंट नॉब. इनका मकसद ये है कि ये स्टेज को अप डाउन या बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है जब हम लोग ना मैग्नीफाई करके चीज़ को देख रहे होते हैं. तो हमने अब हिलाना होता है उसको, हमने उसकी लेफ़्ट साइड देखनी है स्पेसिमेन की, हमने उसकी राइट साइड देखनी है, तो उसको देखने के लिए ये नॉब्स हमारे हेल्प करते हैं. सबसे पहला जो नॉब है ना, कोर्स एडजस्टमेंट वाला, ये मूव करता है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्टेज अप एंड डाउन. तो ये स्टेज को अप एंड डाउन, यानी स्टेज ऊपर आए या नीचे जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करेगा. सो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो जाती है. लाइक जब चीज़ क्लियर आती है तो पीछे वाला देखिए ब्लरिड हो जाता है, और ये जो आगे वाला है ये क्लियरली सी होता है. जब नीचे जाता है तो इस तरह से क्लियर आता है. सो ये चीज़ें इसमें मैटर करती हैं. Fine adjustment knob, it's the fine tube that helps to create the focus on your specimen. तो ये specimen में focus करने के लिए, और ये बिल्कुल साइड से ना पतली सी ट्यूब होती है जिसको आप यूँ करके हिलाते हैं और फिर वो क्लियर होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस, यूजली 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिए हुए थे, और इसकी मैग्नीफिकेशन होती है 10x, 40x और 100x. मैंने आपको पहले भी बताया थे, उनके डायग्राम में भी मैं शो किए हुए थे. तो ये थे मैग्नीफाइंग पार्ट्स ऑफ योर माइक्रोस्कोप. अच्छा, बात करें ना इनके याद करने के तरीका में, यानी आपको इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा. तो याद रखना है, जिसके साथ फाइन लफ्ज़ आता है, फाइन एडजस्टमेंट नोब, उसका काम हमेशा फोकस करवाना है, और जो कोर्स एडजस्टमेंट प्रोब है वो आपका अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, तो इस हिंट से आपने इसको चीज़ को याद रखना है. So now we are going to start some illuminating parts of your microscope, and the first illuminating part, illuminate word mean to explain, to expand something. Illuminate mean to उर्दू में अगर मैं बताना चाहूँ तो किसी चीज़ को वाज़िया कर देना. तो किसी चीज़ को अगर हमने वाज़िया तौर पे देखना है तो हमें उसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए पहला पार्ट आता है लाइट सोर्स. So it makes the specimen to see without the light.
source. So we can see clearly focus on the minute miniatures on the slide. लाइट सोर्स से मतलब ये है कि आपका माइक्रोस्कोप एक ऐसी जगह पर है जहाँ से कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है, और आप उसको फिर कैसे देखेंगे? बगैर लाइट के आपको स्पेसिमेन नज़र नहीं आएगा। सो ये लाइट सोर्स पहले से ही माइक्रोस्कोप में अटैच हुआ होता है, जो लाइट आपके माइक्रोस्कोप को देता है और आपको स्पेसिमेन नज़र आता है। दूसरा जो इल्यूमिनेटिंग पार्ट है वो हमारे पास डायफ्राम और कंडेंसर होता है। इसको आप डायफ्राम भी कह सकते हैं, कंडेंसर भी कह सकते हैं, ज़्यादातर कंडेंसर कहा जाता है। सो इट यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग थ्रू द स्पेसिमेन, कि कितनी लाइट, चाहे ज़्यादा लाइट पास करे या कम लाइट पास करे। सो डायफ्राम हैज़ the different slides and has various intensity and the size of the light source. तो मतलब इतने से सुराख से लाइट सोर्स आएगी या बड़े से सुराख से आएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। सो ये चीज़ डिसाइड करना कंडेंसर का काम है। प्रोसीजर क्या है, अब आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ कैसे करना है। प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज की क्लिप से आप उस स्लाइड को फिक्स करेंगे, स्विच ऑन करेंगे आप अपने माइक्रोस्कोप का। लुक एट द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेट इट्स स्पेसिफिक पावर। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की स्पेसिफिक पावर क्या आपने देखनी है। सबसे पहले हम लो पावर से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस की 3 पावर्स होती हैं, 10x, 40x एंड 100x। तो स्टार्टिंग पावर आप कौन सी रखेंगे? 10x रखेंगे। फिर 10x से अगर आपको स्पेसिमेन क्लियर नहीं होगा तब आप 40x ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट करेंगे। जब आपको 40x पे भी स्पेसिमेन सही तरह से नज़र नहीं अगर आया है तब आप 100x पर जाएंगे। सो हमेशा इस तरह से करते हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं वो स्टार्ट में ही 100x से स्टार्ट कर देती हैं, ऐसा नहीं करना है, आपने 10x से स्टार्ट करना है। टर्न द फोकस नॉब टू मेक द स्टेज अप एंड डाउन। तो अगर आपने स्टेज को अप एंड डाउन करने की ज़रूरत है तो फोकस नॉब या दूसरा जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है उसको सेट करें। लुक एट द आई पीस और फोकस नॉब अंटिल द इमेज इज़ क्लियर। तो आई पीस के ज़रिए से आप देखते रहेंगे जब तक कि इमेज क्लियर नहीं आ जाता। जैसे इमेज क्लियर आ जाएगा तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय कंडेंसर। कंडेंसर आपकी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा होगा। देन प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं। रिमूव द ग्लास वाइल वॉचिंग थ्रू द आई पीस। तो जब आपने ग्लास को रिमूव करना है या स्लाइड को रिमूव करना है तो आपने आई पीस से देखते हुए करना है। योर आई लैशेज शुड नॉट टचेज विद द ऑक्यूलर लेंस। आपकी आई लैशेज उसको टच ना करें। वंस द स्लाइड इज़ सेट, जब आपकी स्लाइड सेट हो जाए, डोंट टच द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। तब आपने कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो कि स्लाइड को अप एंड डाउन मूव करवाता है उसको फिर आपने मूव नहीं करना है। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस थी। सो हमने देखा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स कौन से हैं, मैग्नीफाइंग पार्ट्स कौन से हैं और मैकेनिकल पार्ट्स कौन से हैं। मैकेनिकल पार्ट्स हमारे पास आर्म है, हमारे पास बॉडी ट्यूब है हमारे पास, और इसके अलावा कौन सा मैकेनिकल बेस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेज था और स्टेज क्लिप्स हमारे पास थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पार्ट्स की तो उसमें ओक्यूलर लेंस आपके पास आ जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है। इसके अलावा नॉब्स आ गए थे आपके पास, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट जो पार्ट्स आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के, वो हमारे पास इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स थे। उसमें सबसे पहला लाइट सोर्स आ गया था और दूसरा डायफ्राम और कंडेंसर जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने प्रोसीजर देखा और उसके प्रिकॉशंस देखे। सो ये था हमारा आज का पहला एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रूड ड्रग स्टार्ट करेंगे जो कि डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती होंगी। हम उनकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।